Good afternoon, everybody. I think in a series, it could be my fifth or sixth session every year to come here to speak on a topic of a bank audit. For many of you, it would be like like this book opens in March and get closed in April per se. But for me, it's like a daily routine for me, because I specialize in the audit of the banks. And I think what Arpit said was very right. When he talked about the new technology, new skills which you all should be aware about it. He spoke, that we should be aware about what are the developments which are happening at the ICI level. I have worked at some of the committees of the ICI, and I know what kind of tremendous information you get when you are associated with the institute. What I will be dealing with today, I'll be dealing with two topics. Similarly, about the ICI, I'll be dealing with what are the developments which are happening at the RBI level, because day in and day out my interaction happens with the RBI, Reserve Bank of India, with their SSMs, with their supervisory officers. In fact, after 3 days itself, on 19th, I'm again meeting a SSM, because as an auditor of a private sector bank, you are required to meet the RBI officials on a regular basis. So the session I will be covering in two parts. One will be, dealing with the new changes which are there, which are relevant for the current year's audit. And also, topic for the day, which is mainly the IRAC norm. So till the time these guides sets up, just show of hands, how many of you are a new entrant to this area and how many of you are like a season. I can see some of the familiar faces, who have seen every year kind of a thing. So who are the new entrant to the profession, so that, I can accordingly decide the scale of my presentation. Okay, hardly I see. So all are experienced and all are like a, seasoned player. So before I was coming here, I just got a call from one of my friend, and he asked me, where are you today? I said, I'm going to speak on the at a Vasai branch on bank branch audit, etc. He told me, are you talking something on IndusInd Bank? So, I'm sure all of you are interested to know what has happened in the IndusInd Bank. However, I'm sorry to disappoint you all, because when the management is not aware that what has happened in the IndusInd Bank, how can I comment upon it? So, but I would request you, if you're really interested in knowing that what has happened, at least what information is available in public domain, there is a analyst called transcript, which has come after the CFO call on 10th of March. Read that transcript. You will get to know at least 50-60% of the things which has happened at the IndusInd Bank. And obviously it is not relevant for all of you, not relevant in terms of this topic, because this topic deals with bank branch audit, and all these derivative products and portfolios are normally handled at a central office level. However, if time permits, at the end, I will give you an example that what has really happened, because I myself have dealt with those products in the capacity as an auditor. Now, just giving you a brief perspective and brief, analysis. This is what RBI does with us every year. Every year. People who are very familiar to the cricket would know what does this mean. Every year, they come up with new things. This is a new ball, by the way, in the test cricket, which, the umpire gives a signal that this is a new ball, and then the team has to make their strategy how to play with the new ball. Every year, the RBI comes up with new things. What are the new things in the current year? We'll be discussing about it. It may not be relevant from the IRAC perspective, let me tell you all, but it is very much in the eyes of the RBI. And see, the qualities of the auditor, I'm sure the MOCs are relevant and the MOCs are important. But the quality of the auditor is also judged that how are you reporting on the new aspect or the new areas in the current year itself. So this will be one of the discussion point for us. And this is I like the most. This quote has come from the RBI. What does it say? It says, RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए. This is for the customer. I think it is aptly applicable to the auditor as well.
You should be aware about what are the things which are happening on the RBI front, on the bank front, so that you can do the audit perfectly when you go on the branches. And let me tell you, this is all 2020 game, right? You go, you play in the slog overs and you expect to hit a century. Now you can hit a century provided you know how the bowler is gonna bowl. If you know the bowler properly, you can, devise your strategy as well. Over a period, and I'm giving you just flavor of the RBI so that, my friend, you should be aware about it, that what are the important area which one should be focusing upon. If you look at the approach of the RBI in past, in 2 to 3 years or 3 to 4 years, the approach is suddenly changing. It is not only restricted to, what you say, giving a penalty or levying a penalty on any of the institution or a banking financial companies, etc. It is suspending their business operation itself. It is not that, okay, you pay 50 lakh rupees and I will allow you to do something over a period of 1 or 2 years. It is simply stop the business, discontinue the business. And I'm not sure the days are not very far where similar kind of a restriction may happen on the auditor as well. Let me tell you, I'm not threatening you all. I'm just trying to give you some piece of advice, because all these branch audits, all these bank audits have anyway reduced to 70%, and as the management decides. Let's do this quality work within the period of 10 days, 12 days, 15 days, whatever we are doing. Because days are not very far when the RBI will start picking up your reports, will start looking at those reports and will start asking you questions. They're asking the questions to the banker, let me tell you. They're asking the question to the central stat auditor. I myself appear before the RBI on every quarterly basis to tell them that what have I done, what are the areas I have found out, what are the new issues I have identified in the bank, and then they give me a whole list of laundry list which areas I need to work upon in the next quarter. So this is the area which is good remunerative, but also a risky area as well. So we should have a calculated risk whenever we are doing this kind of an audit. And the firms which would have got subjected to some kind of RBI inspection would be aware about it. Now, what are the things which we should be very clear about it? One thing we should be clear about from the RBI is that there is a change in the approach of the RBI. The RBI is now not looking into from the perspective of you that, okay, you tell us what are the non-compliances, or you tell us what are the issues on the credit front, etc. Let me tell you, NPA issue has been taken care by the RBI. And whoever is telling is that there is a stress in the NPA, there is a stress in the loan, we will see it which areas there is a stress and which areas somebody has to look at it wherever you are doing, whichever audit you are doing. And when the RBI is changing the approach, as an auditor, we should be aware about some of the important aspects or the challenges at least which we have in the current year. What are the challenges which the auditor has in the current year? The first challenge is the RAM portfolio. Don't get me wrong. Everybody, RBI, banker and the auditor is talking about RAM. RAM not in that sense. It's a retail, it's an agri portfolio and it's a MSME portfolio. That is how they make it as a RAM portfolio. This is one portfolio, my friend, which has been the focus of the RBI in the recent past. So if you are an auditor of any branch which has a retail portfolio, when I say retail, what do you mean by retail? It's a home loan, vehicle loan, or you have a MSME portfolio. MSME means there could be CCOD facility, there could be term loan facility to the MSME clients. This is one of the focus area of the RBI in the current scenario. And if you have any audit, if you are getting any branch which has this kind of portfolio, you will ask me, Pankaj, so what should I do? Simple, कुछ करना नहीं है आपको, खाली उनकी जो सैम्पलिंग टेक्निक है उसको आप चेंज करिए जरा. Even though housing loans, you will say that ये तो बहुत easy loan होते हैं, collateral की value हमारे पास available होती है या फिर हमारे पास property value है. But my friend, that is not the point which the RBI is expecting you to verify. Even RBI knows housing loan is fully secured loan. But still they ask you questions over there. What are they asking you? They are asking you, are the banks following their policy appropriately?
Let me give you a simple example. Last year I was doing an audit of an NBFC and I was visiting a branch of the NBFC, equally applicable for the banks as well. होता क्या था कि भाई वो ब्रांच लोन को सैंक्शन करता था, और आपको पता है होम लोन लेने के 5-6 कंडीशन होते हैं. आपकी एलटीवी नॉर्म प्रॉपर होनी चाहिए, आपके इनकम क्राइटेरिया मीट होने चाहिए, और आप सैलरीड क्लास है तो पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ एम्प्लॉय से पर्टेन करने चाहिए. ऐसे समझिए 15 कंडीशन है उस लोन पे. नाउ आउट ऑफ 15 कंडीशन इफ यू हैव टेकन डिविएशन ऑन 12 कंडीशंस, ना तो उसका इनकम क्राइटेरिया मैच हो रहा है, ना तो उसका विंटेज मैच हो रहा है कि भाई ही शुड हैव वर्कड इन अ पर्टिकुलर कंपनी एटलीस्ट फॉर 2 years टू हैव अ स्टेबिलिटी ऑफ एन इनकम, राइट. ही इज जंपिंग ऑन द कंपनी एवरी ईयर. अभी अगर आपके पोर्टफोलियो में जो भी आपने लोन सैंपल चेक कर रहे हैं, उसके पोर्टफोलियो में आपको लग रहा है कि भाई द ब्रांचेस और द सीपीसीज are giving various deviation to the portfolio, that is a risk which you have to identify. कि भी कल को की ये लोन डिफॉल्ट भी हो सकता है. The probability of default is higher in those loans as compared to other loans. So technically what you need to do, you need to pick up the samples, या फिर आप उन samples को check करिए जिसमें ऐसे deviations दिए हुए हैं. I am not saying you are identifying a fraud. I am just saying that you should do your diligence to make sure that the bank has complied with its policy per se. दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, एंड इसके ऊपर हम बात करेंगे थोड़ी सी, इज गोल्ड लोन पोर्टफोलियो. टिल टुडे, एंड आई विल शो यू सम ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स ऑन द गोल्ड लोन. इट्स नॉट ओनली ऑन द आरबीआई. आई विल शो यू अ क्वेश्चंस आस्क्ड in the parliament by an MP on the gold loan portfolio. So this is one of the significant area of the audit in the current year, my friend. And I'll tell you the reason behind it. All these quick loan, what do you mean by quick loan? ये सब जो काउंटर पे मिलते हैं ना ब्रांचेस के, loan against FD, loan against gold, etc., etc. This is one of the area of focus of the RBI, because RBI expects, or RBI is thinking that there is something fishy going around in these loans. That's why अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करोगे, या तो आप जाके आज गूगल पे लिखिए गोल्ड लोन पोर्टफोलियो RBI inspection, you will have a whole list of issues which the RBI has identified. Please pick it up as one of the important area for the current year's audit. गोल्ड लोन अगर आपकी ब्रांच में है, एक पूरा का पूरा सर्कुलर आया है गोल्ड लोन के ऊपर, जो हम थोड़ी सी बात करेंगे. And I'm sure you will not allow me to extend the lunch time, so I'll finish it by 1. Don't worry about it. The another important area is the IRAC norm, which I will discuss it. And let me tell you, whenever people say that automation has been done in any bank, it's a false. I can say, stand on this stage and I can say that no bank has implemented 100% of NP automation. Otherwise, none of these banks will have a manual intervention. And what happened in the 5th largest bank of India is exactly this issue. When you start relying on the system too much, and when you forget your basic accounting entry, which need to be passed in the system, you will have such kind of incidences. आप जाके वो देखना वो situation क्या हुआ है. It's a simple accounting entry mismatch, which has caused a bank around whatever 2,000, 3,000 crore, whatever they are telling you all. So NPA automation हुआ है, ये आपको बताया गया है. आपको चेक भी करना है, और मैं बताऊंगा 2-4 एरिया जो आपको चेक करने रहेंगे उसमें. So important point from this slide is that RAM portfolio अगर आपकी ब्रांच में है, गोल्ड लोन पोर्टफोलियो आपकी ब्रांच में है, और IRAC ऑटोमेशन. These are the 3 points which one should be aware about it. अब आते हैं कि भाई RBI दुनिया भर के सर्कुलर निकालता रहता है, and I'll congratulate that whatever book you all have got, it has an important section which says that summary of important RBI circular. जो बुक आपको मिली है सबको, उसमें एक पूरा एक चैप्टर लिखा हुआ है, आप पढ़िए उसको जरा. It says summary of important RBI circulars which are issued during the 24-25 which are relevant. I will tell you, कुछ मत पढ़ना. I know you people are very busy guys. Just read these circulars which are listed over there. और उसको समरी में डाला हुआ है, उसका डिटेल आरबीआई के वेबसाइट पे अवेलेबल है. उस सर्कुलर में से हम 2 सर्कुलर को इन डिटेल वी विल कवर दो सर्कुलर. सो देयर आर लॉट मेनी सर्कुलर विच आर इशूड बाय द आरबीआई. One was issued in the last year, which is on the floating rate of interest loan. I think this is, it's a settled thing. Basically, this only gives you an option कि भाई अगर आपका fixed to floating या floating to fixed change करना है, आपके interest rate increase in the interest rate scenario,
what are the process the bank should follow, that the circular gives you. Another important and very relevant circular, may not be that critical but relevant, is inoperative accounts, which is issued in January 1st 2020-24 and applicable in the current year 24-25. ये circular मोटा मोटी क्या बताता है मैं आपको बता देता हूँ, because this circular was issued based on one of our observation on one of the banks. This clarification had come from the RBI. ये सर्कुलर आपको ये बताता है कि भाई इनऑपरेटिव अकाउंट कब क्लासिफाई करने पड़ते हैं. आप सबको एक नॉर्मल डेफिनेशन पता है कि भाई 12 महीने तक अगर किसी अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं किया तो वो अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाता है. करेक्ट. दिस सर्कुलर क्लैरिफाइज दैट what is customer induced transaction and what is bank induced transaction. If there is customer induced transaction in an account, you can't classify that account as a inoperative account. क्योंकि क्या है, आपको सिंपली ये सर्कुलर का मतलब हार्ड समझा देता हूं. ये सर्कुलर नहीं चाहता है कि आप किसी अकाउंट को इनऑपरेटिव अकाउंट क्लासिफाई करिए. क्यों? इनऑपरेटिव अकाउंट क्लासिफाई करने के बाद 10 साल के बाद ये पैसा आरबीआई को जाता है. डेफ, डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड. आरबीआई के पास इतना पैसा हो गया है डेफ में, दे डोंट वांट द बैंक्स टू ट्रांसफर द मनी टू देम, बिकॉज व्हाट आर यू गोना डू विद दिस मनी विच इज कमिंग इन द डेफ. So that's why they said before you classify any account as an inoperative account, अगर एक single customer induced transaction हुआ है, अगर उसने एक ECS का mandate भी दिया है उसके home loan repay करने का, वो भी customer induced transaction है. You can't call that account as a inoperative account. तो मोटा मोटी वो सर्कुलर है. आप बोलोगे पंकज जी हमें क्यों बता रहे हो? बैंक ब्रांच ऑडिट में तो एडवांस देखना रहता है, डिपॉजिट तो देखना ही नहीं रहता है. सॉरी टू से LFAR में क्लॉज है जो आपको बताया गया है कि भाई इनऑपरेटिव अकाउंट्स पे भी आपको कमेंट करना है. सो बिफोर यू कमेंट ऑन द LFAR के इनऑपरेटिव क्लॉज, जस्ट हैव अ लुक एट दिस सर्कुलर बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट सर्कुलर फॉर द करंट ईयर. अब हम आते हैं दूसरे सर्कुलर्स पे. 10 मिनट तक एकदम ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बिकॉज दीज टू सर्कुलर्स आर द मोस्ट क्रिटिकल फॉर द करंट ईयर्स ऑडिट. One is on the fair practice code and another is the gold loan. I will straight away go to that circular. ध्यान से सुनिएगा, दिस इज अ रिलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट वन. सी क्या होता था मालूम है, आई गिव यू अ बैकग्राउंड बिहाइंड दिस, एंड दिस वाज अगेन एन इशू विच वी हैड हाईलाइटेड इन वन ऑफ द बैंक्स एंड रिटन इट टू आरबीआई. सी क्या होता है कि आप लोन पे इंटरेस्ट कब से चार्ज करोगे. सी कॉर्पोरेट लोन्स में इशू नहीं आता है. क्यों? कॉर्पोरेट लोन्स में इशू इसलिए नहीं आता है क्योंकि आप उसके डायरेक्टली सीसीओडी अकाउंट में या तो करंट अकाउंट में आरटीजीएस के थ्रू या एनईएफटी के थ्रू डिसबर्समेंट कर देते हो. दैट मीन्स देयर इज अ रियल फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम अकाउंट ऑफ अ बैंक टू द अकाउंट ऑफ द कस्टमर एंड ही कैन इमीडिएटली यूटिलाइज इट, राइट. सो हम उस पर इंटरेस्ट कब से चार्ज करेंगे? फ्रॉम द टाइम आई डिसबर्स द लोन एंड फ्रॉम द टाइम ही गेट्स द क्रेडिट ऑफ द लोन. अब होम लोन में तो ऐसा होता नहीं है. आप जिसने होम लोन किया उनको पता है, कोई चेक इशू करते हैं, कोई डीडी इशू करते हैं, कोई बैंक्स, and that DD can remain unrealized for a period of 1 month also. वो देखेगा कि भाई गुड़ी पाड़वा कब आ रहा है, उस दिन मैं मेरा रजिस्ट्रेशन करूंगा. वो देखेगा कि भाई कोई ऑस्पिशियस डे कब है, उस दिन मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा. दैट डे द बैंक में नॉट बी ओपन और द बैंक में नॉट डिसबर्स द लोन. होता क्या था कि भाई बैंक डीडी इशू कर देता था, बैंक उस दिन से अपना इंटरेस्ट चालू कर देता था. डीडी उस ब्रांच मैनेजर के ड्रॉर में पड़ी है, डीडी कस्टमर को गई ही नहीं है. What you have done, you have shown a loan in your balance sheet and you have started accruing interest on the loan. किसी कस्टमर को समझ गया भी ये तो गलत है, उसने आरबीआई को उठा के लिख दिया. उसके बाद ये सर्कुलर आया है and this circular came in middle of last year's closing, 29th April 2020-24. Half of the banks were closed, I mean to say the results, and half of the banks were in process of closing. और इसमें कोई इफेक्टिव डेट नहीं दिया था. अभी ये सर्कुलर का रेलेवेंस क्या है? ये सर्कुलर ये बोलता है, आप पढ़िए इसको ध्यान से. एंड आई वाज शॉक्ड टू सी दैट दिस सर्कुलर वाज नॉट इंक्लूडेड इन WIC पब्लिकेशन. इट इज देयर इन योर पब्लिकेशन बाय द वे. इट्स देयर, इट्स इंक्लूडेड इन द पब्लिकेशन विच हैज कम आउट बाय द वसई ब्रांच. दिस सर्कुलर सेज सम ऑफ द अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑब्जर्व्ड आर ब्रीफली एक्सप्लेन्ड बिलो. कॉन्टेक्स्ट समझिए आप कि भाई डीडी दिया है, लोन डिसबर्स नहीं हुआ है, इंटरेस्ट चार्ज करना चालू कर दिया है कस्टमर को.
charging of interest from the date of sanction of the loan or date of execution of the loan agreement and not from the date of actual disbursement of fund to the customer. ये बोल रहे कि भाई आपने जिस दिन लोन अग्रीमेंट साइन किया उस दिन से आपने इंटरेस्ट लगाना चालू कर दिया, या फिर आपने जिस दिन से उसको लोन सैंक्शन किया उस दिन से इंटरेस्ट लगाना चालू कर दिया, नॉट फ्रॉम द एक्चुअल डिसबर्समेंट ऑफ द लोन. आरबीआई हैड आइडेंटिफाइड दिस एज अ अनफेयर प्रैक्टिस कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं, आप ऐसे नहीं चार्ज कर सकते हैं. सिमिलरली इन द केसेस ऑफ लोन बीइंग डिसबर्स्ड बाय चेक, instances were observed where the interest was charged from the date of the check, whereas the check was handed over to the customer several days later. मोटा मोटी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपकी बैंकों में या आपके एनबीएफसी में या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आप किस दिन से इंटरेस्ट चार्ज करना चालू करते हो. एंड लेट मी टेल यू, ये किसी का फॉल्ट नहीं है बाय द वे. द सिस्टम एट द बैंक्स आर सच कि भाई जब मैं एक चेक को निकालता हूं, अब चेक तो मैं लिख के दूंगा नहीं, वो सिस्टम से ही मुझे निकालना पड़ेगा, उसका लोन अकाउंट नंबर जनरेट करना पड़ेगा, उसके बैकग्राउंड के सारी चीजें डालनी पड़ेगी. द मोमेंट आई प्रिंट द चेक, द लोन गेट्स क्रिएटेड इन द सिस्टम एंड आई स्टार्ट अक्रूइंग फॉर द इंटरेस्ट. दैट मे बी इंटेंशनल, मे नॉट बी इंटेंशनल, वी डोंट नो. बट आरबीआई ने बोला है भी आप ऐसे नहीं कर सकते हैं. जहां पे भी आप डीडी इशू कर रहे हैं, चेक इशू कर रहे हैं, उन सारे केसेस में द इंटरेस्ट शुड स्टार्ट फ्रॉम द चेक हैंड ओवर डेट. भाई किस दिन आपने चेक कस्टमर को दिया है, अगर आपने उसी दिन दे दिया है तो उस दिन से इंटरेस्ट चार्ज होगा. अगर आपने 10 दिन बाद दिया है तो आपको 10 दिन बाद से इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा. आप बोलोगे पंकज ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, करेंगे कैसे, करना कैसे है? हम इसको 3 क्वार्टर से डील कर रहे हैं. वेरी फ्रैंकली पर्सनली आई एम डीलिंग विद इट. ये कोई भी बैंक ना इसको सिस्टम में लेके नहीं आया है अभी तक. सिस्टम बैंकों का जैसा था पहले वैसा अभी भी है. एज एन ऑडिटर व्हाट शुड आई डू? बिफोर दैट, not only check handover or check issue date, there is a second observation also by the RBI. In case of disbursement or repayment of loan during the course of the month, some REs were charging interest for the entire month rather than charging interest only for the period for which loan was outstanding. I'll show you a live example of this case. This was identified by us and written it to the RBI. Post with this clarification had come. होता क्या था कि भाई कोई कोई बैंक्स, कोई कोई सिस्टम्स में समझिए आपका 15 तारीख को डिसबर्स हुआ लोन, तो 30 तारीख को जो इंटरेस्ट लेना है वो तो 15 से 30 लेना है. बट सिस्टम्स इन द बैंक्स वर देयर वेयर दे वर चार्जिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे टिल द लास्ट डे. मतलब पहले दिन से इंटरेस्ट लेते थे लास्ट डे तक, 30 दिन का इंटरेस्ट रिकवर करते थे. सो दिस इज व्हाट द ऑब्जर्वेशन ऑफ द आरबीआई. ये पढ़िए आप. आई एम श्योर यू हैव सीन दिस इशू, सो आई विल क्विकली जंप ऑन कि भी आपको करना क्या है. सिंस वी हैव अ स्कैरसिटी ऑफ टाइम, आपको करना क्या है? आप बोलोगे पंकज ठीक है, आरबीआई सर्कुलर समझ गया, नॉन कंप्लायंस समझ गया. एज एन ऑडिटर व्हाट शुड आई डू एट द एंड ऑफ द डे? सिंपल है, आप पहले पता करिए कि आपकी जो भी ब्रांच है, जो भी ब्रांच की आप ऑडिट कर रहे हैं, वेदर इट इज अ कॉर्पोरेट dominated branch or a retail dominated branch. If it is corporate dominated branch, you will not have this issue of check issue and DD issue and so on and so forth, because उनका RTGS से transfer हो जाता रहेगा. If your branch is a retail dominated branch, you have a housing loan, vehicle loan, so on and so forth, then you will have this issue. So पहले आप verify करिए कि भाई आपके लोन कैसे disburse होते हैं, whether these loans are disbursed through RTGS, NEFT, or do you all issue DD and checks also. मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि मेजॉरिटी ऑफ द बैंक्स में एटलीस्ट हाउसिंग लोन इज इशूड या डिसबर्स थ्रू डीडीज ओनली. दिस इज नॉट दैट वो आरटीजीएस से कर देता है, क्योंकि आपको ही पता है सेल डीड में वो डीडी नंबर लिखना पड़ता है, एंड दैट गेट एग्जीक्यूटेड ऑन द डे ऑफ डिसबर्समेंट्स ओनली और ऑन द एक्सचेंज ऑफ द डीडीज. दूसरा आप करिए नेचर ऑफ प्रोडक्ट जहां पे ये हो रहा है. थर्ड, एग्जिस्टिंग प्रोसेस क्या है बैंक का. दैट मीन्स यू आस्क द बैंक, या फिर आप ही उसको पूछ लीजिए कि भाई आप इंटरेस्ट कौन से दिन से चार्ज करते हैं. आर यू चार्जिंग द इंटरेस्ट फ्रॉम द चेक डेट और यू आर चार्जिंग द इंटरेस्ट फ्रॉम द चेक हैंड ओवर डेट. 99.999% it is charged from the check date only.
सारी बैंक्स में, आई कैन गारंटी यू, आप रिकन्फर्म कर लेना अपनी बैंक में जाके, रिकम्प्यूट करिए. वाई यू विल आस्क मी पंकज इतना सब क्यों करना है जब हमको पता है कि भाई ये तो चेक डेट से ही चार्ज हो रहा है, डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं, एमओसी दे देते हैं या फिर एलएफआर में रिपोर्ट कर देते हैं. दिस इज नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज दैट हैव यू परफॉर्म्ड ऑल द चेक्स विच यू आर सपोज टू परफॉर्म. पहले तो आप कंक्लूड कैसे करोगे? यू कैन कंक्लूड बेस्ड ऑन इंक्वायरी. ब्रांच मैनेजर ने बोला है तो मैं उसको अज्यूम कर लेता हूं. आप रिकम्प्यूट करिए कोई भी एक लोन का इंटरेस्ट, वेदर इट इज फ्रॉम द चेक डेट और वेदर इट इज फ्रॉम द चेक हैंडओवर डेट एक्सेट्रा. इसको मैं लास्ट वीक में अहमदाबाद ब्रांच में था, वेर आई टोल्ड देम द सिमिलर थिंग. वेरी इंपॉर्टेंट एंड वैलिड क्वेश्चन बाय आस्क्ड बाय द पार्टिसिपेंट. सर इस पे हम एमओसी दे देते हैं. एनीबडी हैज दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन? इस पे हम एमओसी दे देते हैं. Because the first question comes to everybody's mind कि भी MOC देना है इस पे. Can you give MOC on this issue? Let's suppose you conclude कि भी हमारा इंटरेस्ट, हमारा सिस्टम इंटरेस्ट चेक डेट से कंसिडर कर रहा है, चेक हैंडओवर डेट से नहीं कंसिडर कर रहा है. Can you give MOC on this issue? हाथ उठाइए, हाँ ना, कुछ तो बोलिए. Can you give? You can't give. Or how many are yes? We can give the MOC on this issue. And how many are saying we can't give MOC on this issue? It should be material amount. Anybody else? Who is saying we can give the MOC by the way? अरे अभी इतना हाथ उठाया अभी. हाँ सर बताइए कैसे MOC देंगे आप इस पे? Okay, because you are saying that bank has charged excess interest to the customer. Okay, और किसने बोला MOC हम नहीं दे सकते? Somebody said, right, we can't give the MOC. Anybody else? Yes, please, sir. Correct. See, ये इशू ऐसा है कि भी आपने सैंपल कंप्यूटेशन एक दो लोन्स का किया होगा. You can't perform the calculation or recomputation on the entire loan portfolio. So you cannot quantify the amount. एंड एमओसी में आपको क्वांटिफिकेशन देना पड़ता है. आप अगर एक दो लोन की कैलकुलेशन करोगे, इट मे बी बिलो मटेरियलिटी लेवल एज राइटली सेड बाय हिम, बट इफ आई लुक एट ऑन टोटल पोर्टफोलियो इट माई क्रॉस ऑल्सो. तो आप बोलोगे पंकज फिर करना क्या, छोड़ देते हैं आगे बढ़ते हैं फिर अभी? नो. एंड बाय द वे सर, जस्ट टू क्लैरिफाई, ऑन आरबीआई सर्कुलर कंप्लायंसेस देयर इज नो मटेरियलिटी लेवल. इफ द आरबीआई सर्कुलर इज देयर वेयर द सर्कुलर सेड you can't charge an interest from the customer even though I have charged 200 rupees. I mean, in one of the banks where we are the auditor, we have refunded 27 rupees to the customer because it's a non-compliance with the RBI circular. What we have to do at the end of the day, करना क्या है फिर अभी? Simple है, इसको आप report करिए LFAR में. And there are at least 7 to 8 areas where LFAR में interest income के बारे में बात की गई है. अगर आप LFAR को कंट्रोल F करके इंटरेस्ट करेंगे, 7 से 8 एरिया में आपको पता चलेगा इंटरेस्ट इनकम के बारे में आपको रिपोर्टिंग करनी है. ऑल द प्लेसेस यू रिपोर्ट दैट दिस कॉन्फर्मेशन इज सब्जेक्ट टू आवर ऑब्जर्वेशन अबो, जो आपने दिया है कि भी इंटरेस्ट गलत चार्ज हुआ है कस्टमर्स को. एंड इसको आप हाईलाइट करिए मेन ऑडिट रिपोर्ट में, विच इज द SS 700 रिपोर्ट, सो दैट इट कैन बी एड्रेस टू दी सेंट्रल स्टैट ऑडिटर. मैं आपको बता रहा हूं माय फ्रेंड, दिस इज सच एन इंपॉर्टेंट इशू that all the public sector bank, all the private sector bank, all the small finance bank, everyone is struggling with this issue. और आपको कोई अगर ब्रांच वाला बोले कि भाई हमने तो चेक उसी दिन हैंड ओवर कर दिया था जिस दिन हमने चेक बनाया था, क्योंकि आप बोलोगे भाई मैं एविडेंस क्या है कि भाई दूसरे दिन तीसरे दिन इशू किया हुआ है. दिस इज द बर्डन ऑफ प्रूफ वाज नॉट ऑन यू, द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन हिम. बिकॉज बहुत सारी बैंकों ने ऐसा एक सिस्टम बनाया है जहां पे वो एक कस्टमर से सिग्नेचर ले रहे हैं. नाउ ही माइट टेक द सिग्नेचर अलॉन्ग विद द लोन एप्लीकेशन ऑल्सो, विच वी कांट से एनीथिंग एज ऑफ नाउ, बट एटलीस्ट देर इज सम एविडेंस टू शो दैट द चेक वॉज हैंडेड ओवर टू द कस्टमर. कोई भी बैंक, कोई भी NBFC इसको ऑटोमेट नहीं कर पाया है अभी तक, बिकॉज इट्स अ सिस्टम चैलेंज. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी रेलिवेंट, एंड आई मीन इट शुड नॉट हैपन कि वी मिस आउट दिस एस्पेक्ट. Any questions in this? किसी को? या प्लीज सर.
सी इसको हमने ट्राई किया था एंड गुड पॉइंट, वी सेड दैट कि ओके विल स्टार्ट फ्रॉम अ लिक्विडेशन ऑफ द डीडी. हम क्या करेंगे, हम वो डीडी का इंस्ट्रूमेंट नंबर्स होते हैं, राइट. आई कैन आस्क द लिक्विडेशन डेट बेसिकली कि भी किस दिन आपने वो डीडी को बायर ने लिक्विडेट किया. बट द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द बैंकर वाज कि भी पंकज आप लिक्विडेशन डेट कैसे ले सकते हो. अगर मैंने चेक दे दिया कस्टमर को, उसने 1 महीने तक वेट किया क्योंकि वो गुड़ी पाड़वा का वेट कर रहा था, इट इज नॉट माई मिस्टेक, देन इट इज हिज मिस्टेक दैट ही केप्ट द चेक विद देम. सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड हैव अ चेक हैंड ओवर डेट and not the liquidation date, because transaction date what you're talking would be the check realization date basically, or DD realization date, which could be after 1 month 2 months also, within 3 months, because वो फिर वो stale हो जाता है. So have a look at this aspect, my friend. As I told you, this is a very critical important point, and this was an observation what we had highlighted to RBI in one of our bank. आप देखेंगे हमने क्या किया था, हमने सिंपल काम किया था, हमने सारे प्रोडक्ट्स को लिया था starting from home loan till the education loan. And what did we do exactly? हमने लिखा कि भी आपके इंटरेस्ट कंप्यूटेशन का साइकिल कब से चालू होता है. अगर आप देखेंगे हर केस में हमने लिखा है डिसबर्समेंट डेट टू ईएमआई ड्यू डेट, डिसबर्समेंट डेट टू ईएमआई ड्यू डेट. When it came to CVCE, which is nothing but your commercial vehicle and commercial equipment, it was 30 days irrespective of the disbursement date of the loan, which I was telling you. So this was the case which we had highlighted to RBI on, I think, 10th or 12th of April, and they came out with a clarification on 29th of April. So what you have to do, you have to do simply this. आप देखिए कि भी हर प्रोडक्ट में वो इंटरेस्ट कैसे अप्लाई हो रहा है, फ्रॉम विच डेट टू विच डेट इज गेटिंग अप्लाइड. वी हैड गॉन 1 स्टेप अहेड एंड वी हैड ऑल्सो चेक कि भी अग्रीमेंट में क्या लिखा है. लोन अग्रीमेंट में भी तो लिखना चाहिए कि आई विल चार्ज 365 डेज और आई विल चार्ज 360 डेज. वी हैड वैलिडेटेड फ्रॉम द लोन अग्रीमेंट डेट ऑल्सो. नाउ इफ यू लुक एट इट, in case of CVCE, the agreement is saying that I will charge basis 365, whereas the system was charging basis 360. Why? Because the system was considering 30 multiplied by 12. 30 days in a month multiplied by 12 months equal to 360 days. So this is the point which we want, which you should highlight to the banks. And मैं आपको frankly बताता हूँ, ऐसे issues ही RBI appreciate करता है कि आप बताइए कस्टमर को कहाँ तकलीफ हो रही है. Immediate reaction will come from the Reserve Bank. Immediate, if the customer is at fault. Yes, sir. Sorry? क्योंकि उसमें क्या हो रहा है ना, bankers are not agreeing, sir. But I mean, just to tell you, अगर फंड बैंक के पास रहता है, they have to make a commitment to disburse that money. So whenever a bank makes a commitment, they have a capital charge. मतलब more from a अगर आपको पता हो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एक होता है बैंकों का. So whenever I am committing a fund to the customer, I am taking a capital charge. Now you will not allow me to recognize interest also, and you will punish me from a capital charge also. So it's a double impact for the customer, for the banks per se. That's why the RBI and the banker said you take check handover date basically and not the realization date. Because क्या होता है सर कि भी customer will drag this issue then. Customer will not deposit this money to the bank. नहीं, but उस पे interest why should I forgo? Why should bank should not charge interest on those loans? Bank should charge interest on those loans if the DD is in the hand of the customer, by the way. Anyway, we can discuss this. I will just go to the second point, and which is very important and very relevant. Gold loan. ये इंडस्ट्री बहुत दिनों से फ्लरिश कर रही थी और ये इंडस्ट्री बहुत दिनों से एकदम सुपर एक्साइटेड थी एकदम. आरबीआई ने 30 सितंबर को एक सर्कुलर लाके पूरी इंडस्ट्री की इनडायरेक्टली बोल दिया कि भाई वी नो व्हाट यू आर डूइंग बाय द वे, सो प्लीज कम विद इन द रेडार. आरबीआई ने किया क्या है बेसिकली? आरबीआई ने सिंपल 2-3 चीजें बोली है. नंबर 1, ये जो रोल ओवर होते हैं आपके कि भी बंदा खाली साल में एक बार दिखता है जिस दिन उसका रिन्यूअल होना रहता है. उसके पहले ना ब्रांच बंदे को जानता है ना बंदा ब्रांच को जानता है. ही सेड यू हैव टू स्टॉप दिस प्रैक्टिस. यू कैन नॉट हैव एन इनडेफिनिट रिन्यूअल ऑफ द लोन्स. बाय द वे दे हैव गिवन वन वेरी क्लियर कि भी आप लोन को रिन्यू नहीं कर सकते हो. बट दैट डजंट मीन कि इफ द पर्सन रीपेज द लोन यू कांट गिव हिम द फ्रेश डिसबर्समेंट.
till that level the RBI has not gone, basically. So they came out with whole list of issues. I will highlight only some of the issues. And by the way, this is an information for all of you. Point number 8 on the slide, practice of rolling over loans at the end of the tenure with only part payment. Part payment किसका होता था? Interest का होता था. Only interest used to get paid and the loan used to get renewed without any fresh evaluation also. और बाय द वे गोल्ड लोन में तो इनकम कभी देखी ही नहीं जाती है, हम तो फंड कर रहे हैं गोल्ड लोन की वैल्यू को. दैट इज व्हाट द बैंकर टेल्स अस. एंड यू ऑल शुड बी अवेयर, look at that highlighted part. This is a response to a question in the parliament. This is not my what you say paper. अब पढ़िए वो highlighted part को. The NPA pertaining to gold loan in scheduled commercial bank have increased by 21% during the same period, which is from March to June. NPA in gold loan have increased by 21% in the banks, in scheduled commercial banks. And that necessitated the RBI to come out with this whole list of circulars. Simple है, आपको करना क्या है? By the way, everybody, please. See, that is what the RBI wants to curb. See, कल को उठ के क्या होगा? And by the way, sir, the gold loan prices keeps on fluctuating depending upon how the counter markets operate. How the stock market operates, it has an implication on the gold market also. What RBI's theme is, and we had a long chat with the RBI on this, कि भाई why are you coming up with these things? Gold loan कौन लेता है? Forget about the reality. The perception is that कि the gold loan is taken by the people who are in dire need of the money. Now, if the people who are in dire need of the money wants to take a gold loan, why are you punishing basically? The RBI's perception and RBI's thinking is very clear. We don't want any surprises to happen in any loan portfolio. Tomorrow, if the gold value falls, and if I'm not able to recover the money, because at the beginning, I never tested the income capability of that customer. I funded the loan based on the value of the gold. Now, if the gold value falls drastically, whatever is the situation, what is the recourse the bank has? Nothing. Because there will be huge supply of the gold in the market through the auction process. And once the supply increases, obviously the value need to fall. So there will be huge loss to the banks on the gold loan portfolio. That is the thinking what the RBI has by bringing out all these restrictions on the gold loan portfolio. And they have told the banks softly कि भाई इस पे आप धीमे दौड़ो. Everybody knows कि this is 12%, 14% interest yielding advances. But please go softly on these loans. Don't disburse like a rampant. 30% का loan growth है ये portfolio में. 30% loan growth in this portfolio, and everybody sitting in this hall knows where this money goes. Everyone knows this money where this goes. That's why they have come out with a huge restriction on end use monitoring of the fund also. End use of these loans. But as an auditor, I can do a very limited thing. As an auditor, I can't verify the end use of the fund. As an auditor, I can't question the bank's judgment on giving the loan only based on the market value of the, the gold. So, मुझे क्या करना चाहिए? As an auditor, what should I do? You should do these steps. Simple. And you should report accordingly. One, आप देखिए type of gold loan कितने हैं? Because there are some loans which are like a CCOD facility. Overdraft kind of a thing which happens. And there are some loans which are like a term loan, bullet repayment. साल के end में आके interest देगा. दूसरा, additional loan samples. Gold loan maybe आप करते होंगे, maybe आप 2 sample, 3 sample लेते होंगे. Just have a little bit more sampling and take more sample on the gold loan to verify the whole process of sanctioning, disbursement and everything, etc. Cash payout is not allowed by the RBI now, by the way. RBI बहुत सारी बैंकों में कैश डिसबर्समेंट होता था. आप सबको पता है, everybody knows what that is. RBI has very clearly said that neither you can disburse in cash nor you can accept cash. Simple.
So if your bank is doing still cash disbursement, it is not allowed as per some section of the Income Tax Act. I'm sorry, I don't remember. I think it is 269 SS or something like that, which does not allow you to do a cash transaction. Second is determining the value of the gold. That means what is the process of determining the value of the gold? I myself have visited at least 10 branches to see this gold loan portfolio. वो बंदा आता है, वो बंदा, I'm not sure what he checks, and he gives some numbers to each gram of the gold, and he gets the loan gets sanctioned on that. Is it sufficient? It is not sufficient. If it is as per the process of the bank, we can move ahead. The last one, I would request all of you to do it, and this is a sincere request from to all of you. आप गोल्ड लोन में क्वालिटेटिव एस्पेक्ट चेक करिए. एक खाली काम करिएगा इस बार, गोल्ड लोन के पैकेट्स को काउंट करिए. जो पैकेट्स होते हैं ना ब्रांचेस में गोल्ड लोन के, अगर आप काउंट करते हो, वेरी गुड. इफ यू आर नॉट काउंटिंग, यू कांट ओपन द पैकेट, बाय द वे, बिकॉज सम बैंक्स हैव अ रिस्ट्रिक्शन. आई हैड चैलेंज्ड इट and I had got the packet opened and got it appraised to an independent valuer. But अगर आपकी बैंक नहीं करने दे रही, एटलीस्ट काउंट करिए. द बिगेस्ट एम्प्लॉय फ्रॉड इज हैपनिंग इन दिस एरिया. जो लोन के पैकेट से गायब हो जा रहे हैं अभी, बिकॉज द पोर्टफोलियो सच ए ह्यूमंगस. सो पहले तो आप पता करिए कि भाई उनका कोई अप्रेजल का खुद का इंडिपेंडेंट काउंटिंग का प्रोसेस है कि नहीं है, और है फिर भी आप उसको चेक करिए जाके एट द एंड ऑफ द ऑडिट व्हेनेवर यू आर डूइंग इट. दिस इज अ स्मॉल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड. लुक एट इट, यू विल फाइंड समथिंग डिफरेंट इन दिस पोर्टफोलियो. खाली आप काउंट करिए बस. सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, whatever sir, whatever is available with the bank, it has to be sealed, by the way. I'm telling you, write these things in your report, sir. अगर आपको बैंक पता है, मुझे बता दीजिए. I will inform the RBI. Please do. I will inform the RBI. Yes, please. See, by the way, just to inform you all, every bank has carried out this process of independent, some 30-40 branches were selected by the RBI. एवरी बैंक को बोला गया था कि भी आप इस पे इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन करवाइए बाय द स्टैट ऑडिटर. एंड एज अ स्टैट ऑडिटर माई सेल्फ आई हैव डन 30 ब्रांचेस जहां पे हमने ज्वेल लोन के पैकेट्स ओपन किए हैं, ज्वेल लोन के वापस से उनको वैल्यू किया हुआ है सर. एंड दीज आर द ऑब्जर्वेशंस. ये देखिए, आपको यही देखना है कि फर्स्ट वन यू कांट गिव बिकॉज यू कांट कंप्यूट द कैरेट एंड ऑल दैट, बिकॉज एज अ ऑडिट we are not doing a recomputation or we are not performing the valuation again, because that is not an expectation from all of you also. Of course sir. No, I'm telling you that is not an expectation also from you, that you should go and validate the carat of the gold, because the carat of a ring could differ from jeweler to jeweler also. Somebody might say it's a 18 carat, somebody might say it's a 20 carat. So as an auditor, I have no clue on that. And by the way, whenever we did it, we had a independent jeweler. So sir, that is not an expectation also from you by the RBI, by the way, as a chartered accountant. No, it could be, sir. It could be also. I mean, you and me are, I mean, we can only have a diligence. How can it be a same carat? It could be also, we don't know, because we can't comment upon it. So my simple suggestion to all of you is that please have a look at the gold loan portfolio in a greater detail, the fair practice code in a greater detail. These are the two important areas for the current year's audit. I will quickly go on the aspect of the gold loan, aspect of the NPA basically. So this was first part of my presentation. I'm sorry I took a lot of time, but it was relevant and it was important from the perspective of the new things to know in the banks basically. And now I come to the topic. I will take another 15 minutes if you allow. I will just take 15 minutes to wrap up the IRAC norm. Why IRAC norm? No change. I can say no change, but day in and day out I debate with the banks that how do you classify account as an NPA. So last year
till last year we had one change which was on the OTS norm, one-time settlement cases basically, wherein the RBI had asked the banks to classify account wherever you are doing a one-time settlement and the settlement period is more than 3 months. The RBI had said कि भी इन सारे अकाउंट को आप restructuring tag कर लो और सारे अकाउंट को आप NPA बना दो. However, that was a last year phenomena. This year there is no change in the IRAC norm. Same 90 days DPD, same out of order criteria, same what you say, the valuation methodology. Then we'll say, Pankaj, can we just wrap up and go for a lunch? No, we will not. We will have 10 minutes of the discussion further. Why? Because ये टॉपिक ना मुझे भी लगा था कि भाई इसमें क्या ही बोलना है. देन आई सडनली सॉ द आरबीआई डाइवर्जेंस ऑब्जर्वेशन. सबके पास है, सब गाइडेंस नोट में अपेंडिक्स है, हमने डाला है, आप लोग जाके देखिएगा उसको. गाइडेंस नोट में एक अपेंडिक्स है एंड आई विल शो यू दैट अपेंडिक्स व्हाट इट सेज एंड देन आई थिंक वी शुड डिस्कस इट. Sorry, I'm just switching the slides because I want to go to the specific point which I want to cover. हाँ, ये आरबीआई की डाइवर्जेंस है. इसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि भाई आई डोंट नो, आई मीन which bank it is they are auditing. Second point, third point and fourth point. Fourth point is a very interesting, close to very close to my heart. Frankly, the RBI came out very clearly in their inspection report. While one facility availed by the borrower was non-performing, other were classified standard on the banks. Basics of IRAC norm, borrower-wise classification, and this is a letter which comes from RBI to the institute, that what are the typical reason for divergence in the banks, and this is included as part of our guidance note also. Second, realizable value of the security was observed to be less than 10% of the outstanding. However, the account was not classified as a loss asset. I'm not sure which bank. The third and the important point, which I really appreciate the RBI coming out very clearly in the current year, and all of you would know because many of you were present in the last year session of mine, co-borrower classification. Anybody is aware co-borrower classification? Yes? Look at what the RBI has come out now. The bank had not implemented as on 31st March 2024 the logic whereby default by either the borrower or the co-borrower. Every bank was trying to challenge us कि भाई RBI ने कहाँ लिखा है कि co-borrower के बेस पे NPA क्लासिफाई होता है. This is what the RBI has written now. That default either by the borrower or by the co-borrower, either in their individual capacity or joint capacity, which means joint loan also. So if any of the bank which was trying to argue till last year, because I know some of the banks which is still not classifying the accounts as an NPA based on the co-borrower, except big private banks and big public sector banks. There are few banks which are still not classifying. Now this is an observation from the RBI. अगर आपकी कोई बैंक बोलती है कि co-borrower के बेस पे NPA classify नहीं होता है, show them this guidance. Because this is the issue of the industry. This is not an issue of a bank. Till today, you all were classifying, everybody was classifying the account as a NPA based on the standalone borrower default. Just to recap, इसका मतलब क्या होता है कि भाई एक हस्बैंड एंड वाइफ ने जॉइंट लोन लिया था, होम लोन, वो होम लोन में डिफॉल्ट हो गया है. जब वो होम लोन में डिफॉल्ट होता है, अगर उस वाइफ का और उस हस्बैंड का कोई और अकाउंट होता है, उसको भी एनपीए होना चाहिए. एम आई राइट और रॉन्ग? होता चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इट डजंट हैपन इन द सिस्टम इन फ्यू बैंक्स. द रीजन बिकॉज अगर वो होम लोन में husband is a primary owner or a primary applicant, the cust ID of the applicant is only captured. The cust ID of the wife is not captured in the NPA system. And that is why if there is a vehicle loan of the wife, the vehicle loan will not get classified as an NPA. It is happening today also. So this is one of the point which I was trying to tell you all. Since last 2 years, I think I have been harping on this point. Please classify account of the borrower based on co-borrower criteria, because this is an important issue. Unless we raise it, nobody would bother. And now the RBI has also come up with the issue. Yeah, please. Guarantor or not.
Guarantor is the last source of a recovery. So that means what? You first extinguish all your options which are available and then you go to the guarantor. This was an issue basically which was raised by most of the banks, that whether we should classify a guarantor. Guarantor is not the primary obligant to repay the money. The primary obligant to repay the money was the primary applicant and the co-applicant. They didn't pay the money. Guarantor is not called up to pay monthly installment by the banks. Guarantor is used as a last recourse, specifically to recover the money, etc. So guarantor will not get classified. डायरेक्टर का सी जस्ट टू क्लैरिफाई, आपका लोन अकाउंट एनपीए बनता है पैन बेसिस पे या फिर कॉर्पोरेट आइडेंटिटी बेसिस पे. ओनली बिकॉज दैट डायरेक्टर माइट हैव गॉट क्लासिफाइड एज अ हाउसिंग लोन एज एन एनपीए, यू कैन गो एंड क्लासिफाई द कॉर्पोरेट लोन ऑफ एन एनपीए. नो, बट yes, if the director's wife is a joint applicant in that home loan, his wife will get classified as an NPA and his other loan facility will get classified as an NPA. But you can't extend the logic to the corporate. It could be vice versa. If the corporate loan has gone into default, I might assess the credit risk on the director's loan. But that is a qualitative parameter. मतलब मैं बोलूँगा ही नहीं कि भी उसको बना ही दो. But I will look at it. Is it the only source of income what he has? इसके अलावा उसके पास और कोई काम है कि नहीं है? उसका इनकम कहाँ से आएगा अगर कॉर्पोरेट ही एनपीए हो गया है तो? I can look at all those qualitative criteria to conclude कि भी उसको बनाना है कि नहीं बनाना है. But not only because of the circular require, not because the circular requires it. So my simple suggestion to all of you कि अगर आप लोगों ने को बोरोवर के बेस पे एनपीए नहीं बनाया हुआ है, please make it. Please make it. Show this to the bankers if they ask you. If they ask you. Now, by the way, credit card is just an example. It is not dealt at the branches also, by the way. क्रेडिट कार्ड ब्रांच के बुक्स में बैठता ही नहीं हो, तो सेंट्रल लेवल पे कहीं किसी सब्सिडरी के पास बैठा रहेगा या किसी अकाउंट में बैठा रहेगा. Yes. So what we are trying to say कि भी अगर आपके को बोरोवर या प्राइमरी बोरोवर को बोरोवर अगर डिफॉल्ट हुए हैं, उनकी सारी बाकी की फैसिलिटी आप एनपीए बना दो. नॉट अगर क्रेडिट कार्ड एनपीए बनाए तो मैं आके होम लोन को एनपीए बना दूंगा. So you please understand, credit card has become NPA because of the co-borrower's default. That does not mean necessary कि I will come and classify the home loan also as an NPA. So it has to go from top-down approach, not bottom-up approach, basically. I will just quickly touch upon some of the important areas and then I will conclude. I think I will just go directly on the points. Okay. Quickly. ये है issues, हमको ही पता है, लास्ट ईयर भी थे, अभी भी है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनपीए पे मैं ये 4-5 पॉइंट है विच आई कैन जस्ट टेल यू, यू कैन हैव अ लुक एट इट. नंबर 1, सेकेंड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, क्वालिटी ऑफ क्रेडिट इन द सीसी अकाउंट. बहुत सारी बैंक्स, बहुत सारे commercial, public sector, private sector, both, and I will not say this is intentional, this could be unintentional issue also. क्या होता है, हमारा क्रेडिट कार्ड का ना जो आउट ऑफ ऑर्डर क्राइटेरिया है ना, वो थोड़ा फनी हो गया है अभी आफ्टर दिस 21 डायरेक्शन एंड ऑल दैट. Now this is like a continuous 90 days criteria. हर दिन पे CCOD का अकाउंट टेस्ट होता है फॉर एनपीए क्लासिफिकेशन, और वो देखता है कि पिछले 90 दिन का क्रेडिट कितना था और पिछले 90 दिन का डेबिट्स कितना है, वेदर द क्रेडिट्स आर इनफ टू सर्व द इंटरेस्ट विच इज चार्ज ड्यूरिंग दैट पीरियड. सो व्हाट हैपेंस कि भी सम केसेस द अकाउंट में गेट क्लासिफाइड एज एन एनपीए, बट सम बैंक्स व्हाट दे हैव अ प्रैक्टिस ऑफ डिसबर्सिंग द लोन्स. बिकॉज आपको पता है कि भी अभी ये करंट अकाउंट का सर्कुलर आने के बाद CCOD अकाउंट एंड द करंट अकाउंट इज वन एंड द सेम. देयर इज नो सेपरेट अकाउंट प्रोवाइडेड यू हैव सम रिलैक्सेशन ऑन दैट. होता क्या है कि भी कुछ केसेस में टर्म लोन गेट डिसबर्स टू द CCOD फैसिलिटी. प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. कोई टर्म लोन का इंस्टॉलमेंट या फिर कोई टर्म लोन का रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस गेट क्रेडिटेड टू द CCOD अकाउंट. That should not be considered for the purpose of your out of order criteria. That is not an, what you say, a repayment coming from a customer. So quality of credit, when I am saying, have a look at it, the credits which are there in the accounts, whether those are business credits
or these are the credits which are coming from the bank only, and they are getting counted for your out of order criteria. Second is that classification of co-borrower we discussed in detail, I think so. Auction failures, ये एक ऐसा इशू है जो अभी भी आई एम स्टिल डिबेटिंग विथ वन ऑफ माई बैंक्स. भाई आपने सरफेसी में पोजीशन ले लिया, आपने पहले सिंबॉलिक लिया, बाद में आपने फिजिकल ले लिया, प्रॉपर्टी आपके हाथ में पड़ी है, आप उसको बेच ही नहीं पा रहे हो, एंड यू आर टेलिंग मी दैट्स अ रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी. If you have given me a valuation report which says that the value of the security is 4 crore and you are not able to get the auction at 3.5 crore, what makes me believe that the property value is 4 crore? So I'm debating still with one of my banks कि भाई ये आपका property का value नहीं है. If there are 2 auctions, 3 auctions where it has been done and you have not able to realize the property, and by the way the property market is not down as of now. I can understand that if the property market are down and you are not able to liquidate your property. There could be 2 issues. One, the property is not marketable, or the property does not have the worth what you are telling me. So in the cases wherever you can see a multiple auction failures, or the bank is trying to liquidate that property but not able to liquidate, look at the different aspect कि भी उसका real value है कि नहीं है. Maybe we get convinced by the branch manager when he says कि नहीं सर मैं एक और independent valuation लाके दे देता हूँ आपको. But question that mainly in cases where there are multiple auction failures. Another is, I think what should I highlight is कि भी ये जो RBI के observation है कि भी आप के accounts को borrower logic पे NPA classify नहीं हो रहे हैं basically, या फिर आपके accounts upgrade हो रहे हैं even though there is a overdue in the other account. Have a look at it कि भी बाकी के accounts upgrade नहीं होने चाहिए. To conclude, top focus area for 24-25, and this is an important slide which I keep on displaying in every sessions or every programs what I do. Gold loan portfolio, we spoke a lot on it. I would request you to have a look at it carefully. Fair lending practice, this also we discussed. This is mainly on what? Mainly on चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट कि भाई किस दिन से आप चार्ज करो इंटरेस्ट को. म्यूल अकाउंट इज अनदर इशू. ओनली सजेशन टू यू कि भाई आप देखिए आपके अकाउंट बैंक ब्रांच में कितने इनऑपरेटिव अकाउंट है और उसमें ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, अगर कुछ हुए भी है तो. लोन विथ पेंडिंग सिक्योरिटी क्रिएशन, इफ यू हैव, वेदर दिस सिक्योरिटी इज रियली एग्जिस्टिंग और इट जस्ट बिकॉज the branch is trying to delay the recoverability or delay the losses, they have just kept it like a pending security. Loan under various government scheme is also one of the area. Oh, by the way, एक MOC है, एक area है, देख लीजिएगा. Biggest private bank had the issue in this area, by the way. Refund of proportionate locker rent, a very small area, and as I say, the branch audit is not an audit of advances and NPA. You are signing a report on the entire balance sheet of the bank, branch. RBI का एक सर्कुलर आया था कि भाई अगर आप कस्टमर से एडवांस में लॉकर रेंट रिकवर कर रहे हो, अगर कस्टमर आके 6 महीने के बाद उस लॉकर को सरेंडर कर देता है तो आपको 6 महीने का रेंट रिफंड करना पड़ेगा. This was an option before 2021. This is a compulsion by the RBI after 2021. We were doing one of the bank wherein the bank was not refunding the proportionate locker rent. And as I said, RBI के eyes में customer is a king these days. You raise this observation to the LFAR, it will get picked up immediately because इसमें customer का loss है. So mainly if I have to tell you you all are senior to me in the profession, in the experience and everything, but my only request and suggestion to all of you will be that MOC is not an indicator of performance of any audit. MOC is an outcome of an audit. It does not indicate the performance of an audit. जैसे सक्सेस का 2 भाग होता है. एक होता है कि मनी इज जस्ट कीप अ काउंट. एमओसी उसी तरह है. एमओसी जस्ट कीप अ काउंट
and it is not the end objective. Banker would be here. They are very smart chaps they are. उनको पता है आपको क्या चाहिए. They will just try to delay it. They will give it, but they will give it at the last day. So and I have many friends who are a banker in the public sector bank. They all are branch manager. They have a very special trick to deal with the auditor. कि see Pankaj, what I do, एक account होता है जिसको हम somehow or the other banker auditors को दे देते हैं. उसके ऊपर 10 दिन डिस्कशन करते हैं कि इस अकाउंट को एनपीए नहीं बनाना है. 10 दिन उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और 10वें दिन एग्री हो जाएंगे कि बना दीजिए एनपीए. उसमें हमने क्या किया है? उसमें हमने ये किया है कि आपका टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज को एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर दिया है. एवरी मॉर्निंग यू विल कम एंड यू विल स्टार्ट डिस्कसिंग दैट अकाउंट कि भाई इसको एनपीए बनाना है, इस तरह से बनाना है, ऐसे बनाना है. डोंट फॉल फॉर इट. दे आर वेरी स्मार्ट पीपल. जस्ट डू योर ऑडिट प्रोसेस. ये जो 8-10 चीजें आप इसको चेक करिए. आई एम श्योर if there is nothing wrong in the bank, you will not get anything. But if there is anything wrong in the bank, you will get everything in the bank. So, thank you very much, my friend. और बैंक ऑडिट कहीं जाने वाला नहीं है. People who say it's okay, they can say it all, whatever. ये data है of all the public sector, 12 public sector banks. And this data is for 23-24. You can see the number of branches not going down even after minimum 70% criteria has gone up. Last year में 22-23 में जब 50% 70% का criteria था, 25,000 banks audit हुई थी, branches audit हुई थी. 23-24 when it was left to the discretion of the management, still you have 24,795 branches getting audited. So hardly 200-300 branches का ऊपर नीचे हुआ है, but largely it is the same. Yes sir, you have a question? So I think ये MCA ने बहुत अच्छी बात कही है और सुनी है और किया है. आप वही अगर उस पर कारो एप्लीकेबल है वो कंपनी पे, आप उसकी कारो की रिपोर्ट जाके देखिए. उसके कारो की रिपोर्ट में एज अ ऑडिटर आई हैव टू कमेंट अपॉन वेदर द स्टॉक स्टेटमेंट इज मैचिंग विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नो. एंड इफ द ऑडिटर देमसेल्फ हैव सेड without giving any proper explanation कि भी the stock statement is not matching with the books of accounts, उसका DP नहीं था. And you have to read out the DP from the that day. And if the account is overdrawn, so be it. And it should get classified as an NPA. Now, that is why RBI had asked the MCA to specifically include that clause in the CARO reporting. CARO जो बनाया गया है वो actually 5-6 ministry ने मिल के बनाया है CARO. It is not only a corporate affairs. You have reporting from Benami to reporting on the stock statement submitted to a bank also. So of course, I mean, this is like a old issue. This has to be redrawn and it has to be classified. So friends, thank you so much. I'm sorry to rush it little bit because it was required. And frankly, at the end, I would just suggest have a look at these issues, have a look at these observations. And if you find anything, please report. But don't forget, as an auditor, we need to be an independent. The challenge in the bank audit is not a technical knowledge. The challenge in the bank audit is an independence of the auditor and nothing else. हम सब capable हैं इस audit को करने के लिए, provided how much we give our, what you say. Thank you so much. Thanks a lot.